Human reproductive system. Humans are unisexual, that is, male and female are separate. There are three types of characters we can say or organs. One is primary organ, secondary organ, and accessory organ. Primary organs include testes and ovaries. Primary organs include testes and ovaries. Why? Because these testes and ovaries they produce sperm and hormones. Sperm and hormones both are important. Now the secondary characters. Secondary characters in case of males include vasa differentia, reed testes, penis, etc. And in case of males, and in case of female, fallopian tube, uterus, uh, these isthmus, etc. These include secondary characters. Now, the accessory characters in case of males include like thick voice, body covered by thick hair, broad shoulders. In case of females, the accessory characters include breasts, broad pelvis, thin voice, subcutaneous fat. Now, male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल हम उसको कहते हैं जिसके पास टेस्टिस होंगे जिसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होगा टेस्टिस होंगे secondary characters vasa differentia etc and particularly XY. This XY is one of the important chromosomes of males, and in case of females, we have XX besides 22 pairs in males and 22 pairs in females. Now, the first part of male reproductive system is testes. Testes are they are outside the abdomen because of the temperature for the process of spermatogenesis, formation of sperms. Our body temperature is 37 degrees centigrade, but 37 degrees centigrade. But for the formation of sperms, it should be 34 to 34.5 degrees centigrade because this 2 to 2.5 less temperature than our body temperature perform help us in the process of sperm formation जिसको हम कहते हैं spermatogenesis. Spermatogenesis. अगर हम testes are paired organs up to the 7th month of जब हम माँ के यूट्रस में होते हैं up to 7th month these testes they remain in abdomen and after 7 months of fetal life these testes descend down into the scrotum sac. What is scrotum sac? This is a fold of skin present on lower abdomen. And this scrotum sac has temperature 34 to 34.5 degree. That is 2 to 2.5 degree less than our normal body temperature. I told you that because for the process of spermatogenesis. Scrotum. This scrotum sac, it contains these gubernaculum muscles which keep ये जो gubernaculum muscles है ये टेस्टिस को एक अपनी पोजीशन पर रखने में मदद करते हैं यहाँ से और इसके बाहर जो scrotum sac है it is covered by two layers. Scrotum sac is covered by two layers, that is
ट्यूनिका एल्बुजिना, या हम ये भी कह सकते हैं टेस्टिस आर कवर्ड बाय टू लेयर्स, ट्यूनिका एल्बुजिना एंड ट्यूनिका आउटर साइड, ट्यूनिका वैजिनैलिस. नाउ बिटवीन द टेस्टिस एंड दिस स्क्रोटम सैक, यहाँ पर एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं वैजिनल सीलोम, ए कैविटी, ए स्पेस, उसमें फ्लूइड भी है जिसको हम कहते हैं, उस कैविटी को हम कहते हैं हाइड्रोसील. इसके बाद ये जो टेस्टीज है, आई टोल्ड यू दैट दे अप टू 7th month of fetal life they remain in the mother's they remain in the abdomen of male. उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी in some patients, in some child, we have seen that it may not descend down. उस डिजीज को हम कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म. क्रिप्टोकाइडिज्म, फेलियर टू डिसेंड डाउन द टेस्टिस. लेकिन इन लोगों में प्रॉब्लम होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, बिकॉज व्हेन दे रिमेन इन एब्डोमेन टेम्परेचर इज हाई, सो दे मे नॉट डिसेंड डाउन. टेम्परेचर इज हाई, spermatogenesis may not occur. Cryptokidism, but it can be treated by surgery. It can be treated by surgery. It is being treated by surgery. ये जो टेस्टीज है, एक स्पेशल मसल होती है इनमें जिसको हम कहते हैं डॉट्स मसल्स. In the testes, in the this scrotum sac, we can say outside the testes, there is present a special muscle that is known as Dotus muscle. ये Dotus muscle क्या करती है? अगर ज्यादा सर्दी होगी 34 एनवायरमेंट, तो ये टेस्टिस को ऊपर एब्डोमेन के साथ अटैच करती है, सो दैट its temperature will remain same or normal. But when the temperature increases in environment like in summer, the temperature of these testes may also increase. So again it is maintained by these Dotus muscles. Dotus muscles testes को नीचे लाते हैं. That means scrotum sac के पास Dotus muscles है, ये testes को abdomen के साथ जब सर्दी होती रखते हैं to increase temperature, और नीचे लाते हैं to decrease the temperature. Now अगर हम एक टेस्टीज का सेक्शन देखेंगे, टेस्टीज के अंदर क्या क्या होता है. देखिए ये जो हमारे पास दिस इज द टेस्टीज, टेस्टीज का जो बाहर वाला कवर होता है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस. जो इसका अंदर वाला है ये कवर, ये बाहर वाला जो कवर है ट्यूनिका वैजिनैलिस, अंदर वाला जो है ट्यूनिका एल्बुजिना, टू लेयर्स. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेप्टा. टेस्टीज में सेप्टा होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा. टेस्टीज इज डिवाइडेड इनटू 250 to 300 septa, 250 to 300 septa at testes, or each in each testicular septa there are present around 2 to 3 tubules, seminiferous tubules. That means in total each compartment has 2 to 3 tubules, and each testicle has 900 seminiferous tubules. These are the tunica albugina, vaginalis, tunica albugina, testicular septa, right? These are the seminiferous tubules. This is the reed testes, the sperms which we come we will see here. ये जो स्पर्म्स बनते हैं यहाँ से, वो यहाँ रीड टेस्टीज में स्टोर होने के लिए कुछ टाइम के लिए, फिर वो वासा एफ्रेंशिया के जरिए बाहर निकलते हैं. तो अनदर पॉइंट, that is in epididymis, where temporary storage of sperms occurs. इसके बाद ये जो यहाँ पर जो टिश्यू है इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, टेस्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ अगर हम इस टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एक सेक्शन को हम क्रॉस करेंगे, तो we will see just like this structure. See, these are the three seminiferous tubules, 1 2 3, ये तीन है.
इसके बाद in between the test seminiferous tubules is present this interstitial tissue. interstitial tissue इंटरस्टिशियल टिश्यू में होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और अगर हम एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर देखेंगे क्या हो रहा है क्या है। दिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ये यही जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये बन लेटर ऑन विद टाइम this journal epithelium it contains cuboidal cells। एक दूसरा they will form produce the sperm जिसको हम कहते हैं spermatogenesis। इसके बाद there are present these long pyramid like cells जिनको सर्टोलस cells कहते हैं, नर्स cells भी कहते हैं, and also they are called as nourishment cells because these long pyramid cells ये फूड देते हैं नर्स सेल्स नरिशमेंट देते हैं to these germinal epithelium so that this germinal epithelium will develop into sperms will develop into sperm later on through spermatogenesis और एक बार यहाँ से जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स है और ये इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस इनको और एक इनको और एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं लैडिक सेल्स विच प्रोड्यूस hormones which later on produce hormone one of the most important hormone in males that is testosterone। testosterone which is responsible for the formation of sperm responsible for the formation of testosterone sorry is responsible for the to increase the formation of spermatogenesis and to develop accessory characters in male। टेस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट उसका हमारा एपिडिडाइमस। जो हमारे पास एपिडिडाइमस है एपिडिडाइमस इज 6 मीटर लॉन्ग एंड इसका मेन फंक्शन जो है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। कब तक ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स 18 to 24 आवर्स 1 से 2 दिन तक ये ऑलमोस्ट 18 to 24 आवर्स तक ये स्टोर करता है स्पर्म्स को। कहाँ पर क्यों बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। इस एपिडिडाइमस के 3 हिस्से हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं हेड कैपट एपिडिडाइमस जिसमें इमेच्योर स्पर्म रहते हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा ये जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं बॉडी एपिडिडाइमस। बॉडी जो है उसको कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस। देन वी हैव टेल जो ये वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमस। ये कॉर्डा एपिडिडाइमस में मैच्योर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्पर्म्स की आ जाती है और यहाँ हेड में इमेच्योर रहते हैं टेल में मैच्योर और फिर वो यहाँ से होके जो इंटरनल अगर हम स्ट्रक्चर वो हम आगे देखेंगे यहाँ पर यहाँ से फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हैं पहुंचते हैं इसके वासा डिफरेंशिया। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास वी हैव दिस we can say that this is the main structure of male reproductive system। First we have testes जिसको हम टेस्टिकल भी कहते हैं। इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है स्क्रोटम सैक ये स्क्रोटम सैक है और यह है एपिडिडाइमस का इंटरनल स्ट्रक्चर हेड बॉडी एंड टेल। फिर यहाँ से वासा डिफरेंशिया फ्रॉम लोअर साइड निकलता है वासा डिफरेंशिया सो दैट यहाँ से निकलने के बाद at the neck of this urethra on the neck of urethra this epididymis vasa
वासा डिफरेंशिया, जो पहले एपिडिडाइमस थी, बाहर निकलने के बाद वासा डिफरेंशिया बन गया। ऑन द नेक ऑफ यूरिथ्रा यहां पर ओपन होता है, ना कि यूरिनरी ब्लैडर में, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर, इट यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, urine is acidic in nature, so to prevent acidity ये नेक में आ जाता है, नेक में ओपन होता है, ठीक। और यहाँ पर इसके पास नेक से होने के बाद यूरिथ्रा में साइज ऑफ द यूरिथ्रा वेरीज, इट इज अराउंड 5 inches plus minus is there in length. Now this is the urethra for the to pass the urine, and on this at the same time sperms can also pass. इस सिस्टम को जहां पर sperms भी पास होते हैं, यूरिन भी पास, लेकिन सेपरेटली, इसको हम कहते हैं यूराइनोजेनिटल सिस्टम, यूराइनोजेनिटल सिस्टम। अब यहां पर हमें याद रखना है, यहां पर एक एट द नेक ऑफ दिस वासा डिफरेंशिया, यहां पर एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल जो है ये पेयर्ड होता है, वन ऑन ईच साइड। ये वासा डिफरेंशिया के इस पॉइंट पर ओपन होता है। जब यहाँ से स्पर्म्स आते हैं, उन्हीं को पहले यूरिथ्रा में ओपन होने से पहले ही इनको सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड मिक्सअप होता है। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर मॉलिक्यूल्स जो स्पर्म्स को, एक तो ये एक्टिवेट करते हैं स्पर्म्स को, और दूसरा इट हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, so that पहला, it activates sperms prostaglandins, so that the sperms will be more active, they will reach the distance. दूसरा, कंट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब ये सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल फ्लूइड जो है, सेमन जो है, व्हेन इट विल रीच टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पर ये स्पीड इंक्रीज करेगी, और ताकि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट विल गेट कंट्रैक्ट, so that the sperms will pass ahead। और उसके बाद यहाँ पर और एक ग्लैंड है, दिस इज स्मॉल ग्लैंड, so I cannot say small, but it is single gland, जिसका नाम है prostate gland। prostate gland is single, 30 to 40 small ducts are there, 30 to 40 small ducts। It contains bicarbonates, bicarbonate से क्या होगा, to maintain pH, its pH is 7.5, that is slightly alkaline, not acidic, slightly alkaline, and it contains citric acid। सिट्रिक एसिड से एक मीडियम बन जाता है, अगर एसिडिक से अल्कलीन बन जाता है, सो दैट द sperm should survive, and the secretion which it produces, जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन देता है, उसमें न्यूट्रिशन होती है। एक तो ये मीडियम बनाता है बाय बाइकार्बोनेट, बाय पीएच अल्कलीन, और इट कंटेन्स न्यूट्रिशन, दिस न्यूट्रिशन is required for the sperms when they pass from male to female। और इनको पहली फूड नहीं होता है, फीमेल तो में तो होता ही नहीं है, तो जब ये पास हो जाएंगे, आगे इनको फूड चाहिए, तो वो ये जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इट कंटेन्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म। लेकिन यहाँ पर और एक मसला है, जब स्पर्म्स यहाँ से आ जाते हैं, उनके पास सेमिनल वेसिकल होता है, उनके पास प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड भी होता है, लेकिन ये जो यूरिथ्रा है, इट इज मेन, फर्स्ट वन फंक्शन, इट हैज टू फंक्शंस, one to pass the urine which is acidic in nature, another is to pass the sperms or the semen। लेकिन जब यूरिन पास होता है, तो देयर आर द चांसेस यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन रहें, स्टॉप करें। यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, जब स्पर्म्स यहाँ से आएंगे, तो यहाँ खतरा है दैट दे विल डाई, दे विल डाई। सो इसलिए व्हाट नेचर डिड, यहाँ पर और एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। दिस दिस कॉपर ग्लैंड
व्हाट दे डू, अगर यहाँ पर एसिडिक है ये उसको चेंज करता है इनटू बेसिक मीडियम, और पेयर्ड है एंड दे हेल्प इन कॉपुलेट, फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड को अल्कलीन में चेंज करते हैं, और ये जो मीडियम बनाते हैं पास होने के लिए, सो दिस sperms have to swim, they have to reach a distance. Now this is the penis. Penis is a long, around 5 inch in size, depends upon many things, and the anterior point of this penis is known as glans penis, glans penis, एंड इसके आगे फोर स्किन भी होता है, फोर स्किन in some religion, in some communities, like in case of Muslims and Jews, is being cut at the early age of life, during the childhood. यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो जिसको हम सर्कमसिजन कहते हैं, why nature has kept this foreskin? The reason is that कहा जाता है कि when a baby is in the mother's womb, uterus, तो वहाँ पर there are different environmental conditions. This is the sensitive area, तो इसको उन चीज़ों से इफेक्ट ना हो, एंजाइम से, हार्मोन या केमिकल से, तो नेचर हैज गिवन इट द प्रोटेक्शन. But later on, why it is cut off in Muslims and Jews, it is said that it may contain some germs during the copulation. Urine may remain there, or we can say this germs sexually transmitted diseases may spread by this glans penis. जो एंटीरियर फोर स्किन, जिसको हम ग्लास पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन होता है, इस जिसको हम प्रीप्यूस भी कहते हैं, और इसको कट ऑफ करना पड़ता है. और यहाँ पर भी कुछ एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रीप्यूशियल ग्लैंड कहते हैं. यहाँ पर जो हेड होता है जिसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसके ऊपर फोर्सिकिन जो कट ऑफ होता है, इस ग्लांस पेनिस के ऊपर ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड. दिस प्रीप्यूशियल ग्लैंड produces fluid. This produces fluid by which we can say, which help us in the copulation of copulation process. Now, अगर हम ये पेनिस देखेंगे, व्हाट इज द इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, तो पेनिस जो है इसमें तीन मसल्स होते हैं. ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं पेनिस का, इसमें क्या होता है, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और इसी के अंदर बहुत सारे ऊपर से ब्लड वेसल्स होते हैं इस मसल में, और दो होते हैं ऊपर साइड से जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा. ये जो दो मसल्स हो गए, तीन मसल्स, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, और उसके बीच में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पास द यूरिन. ये जो तीन मसल्स है, व्हाई दे आर kept there, it is because during the process of erection, sperms have to pass from male to female. If erection will not occur, sperms will not pass. So erection is must. तो नेचर ने क्या रखा है, ड्यूरिंग द at the time of erection, blood from the blood circulation enters into these muscles, and erection occurs. Then the penis enters into the vagina to pass the sperms. When the sperms are passed, again the blood comes out from these veins, through veins. First it came through these arteries, and जो veins से वापस आ जाता है, then the erection is off. The erection gets off. This is the function of the penis. That it is a urogenital system, urine as well as sperm. With this structure of male reproductive system completes. Hormonal control in male reproductive system. तो हम जब हम पहले ही देखते हैं, जो two hormones are important. Pituitary gland in males, this FSH
is produced pituitary gland in male as well as in female. We are talking about the male. In male, FSH produced by anterior pituitary, ये जो हम कह रहे हैं टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके ऊपर होता है जर्मिनल एपिथेलियम, और वही जर्मिनल एपिथेलियम देता है स्पर्म। एक दूसरा, लेकिन उस स्पर्म बनने के लिए ये जो सेल्स होते हैं, लैडिक्स, ये जो सेल्स होते हैं सर्टोलस सेल्स, ये क्या करते हैं, लॉन्ग सेल्स pyramid shaped, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, जो हमने पहले देखा है। अब ये जो एफएसएच, ये रेगुलेट करता है इसी जर्मिनल एपिथेलियम को, यानी कि रेगुलेट मींस इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज germ cells to form the gametes. That means FSH causes the formation of gametes from germinal epithelium. पहला पॉइंट। दूसरा, interstitial cell stimulating hormone ICSH produced by Leydig cells, produced by which are present in between the seminiferous tubule. Leydig cells ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन इज द मेल हार्मोन। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास आता है टेस्टोस्टेरोन। क्या? ICSH प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, Leydig cells एंड्रोजन देते हैं, मेल हार्मोन, और वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ये जो सर्टोलिस सेल्स की हम बात करते हैं, ये लॉन्ग सेल्स, these सर्टोलिस सेल्स आर important, they produce a protein, actually two types of protein, एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन है, दूसरा है इनहेबिन हार्मोन। पहले ये क्या करते हैं, सर्टोलिस सेल्स एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन देते हैं, जो अटैच होता है टेस्टोस्टेरोन के साथ, और टेस्टोस्टेरोन कॉजेज स्पर्मेटोजेनेसिस, या टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है इन सर्टोलिस सेल्स के साथ। सर्टोलिस सेल्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड टू डेवलपिंग जर्म्स। जब इनके साथ सर्टोलिस सेल के साथ एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होता है, तो ये बाइंड होने के बाद एबीपी सर्टोलिस सेल के साथ, सर्टोलिस सेल फूड प्रोवाइड करेगी, जर्म सेल्स बनाएंगे जर्म या स्पर्म, एंड बाइंड सर्टोलिस, तो और हार्मोन लेवल इंक्रीज हो जाए, हार्मोन लेवल। अब अगर स्पर्म ज्यादा बने, फूड खत्म हो जाएगा, स्पर्म ज्यादा बनी, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, डेट विल इफेक्ट आल्सो ऑन हेल्थ, तो वहां पर अगेन these सर्टोलिस cells they produce protein that is known as inhibin। इनहेबिन क्या करता है? ये इस रिएक्शन को स्टॉप करता है, टू डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, टू स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस।